is the unit of displacement? Meter. What is the unit of time? Second. Okay? तो उम्मीद करता हूं आप साथ के साथ इंप्रूव कर रहे हो. What will be the nature of the graph if the body is at rest? अगर बॉडी रेस्ट पे है तो कैसा ग्राफ आता है बेटे? तो हम देखेंगे T1 टाइम में बॉडी इतना डिस्प्लेसमेंट बनाकर बैठी हुई है, इतना, तो इधर से लाइन खींची, इधर से लाइन खींची, परपेंडिकुलर, ये पॉइंट आ गया. T2 टाइम पे भी बॉडी उसी पोजीशन पर है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट है. क्यों? बॉडी इज एट रेस्ट, वो अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रही, तो ये पॉइंट आ गया बेटे. T3 टाइम के ऊपर भी वही डिस्प्लेसमेंट है. व्हाई? बॉडी इज एट रेस्ट. तो इस तरह से जब इन सारे पॉइंटों को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ ऐसा आएगा. कैसा? ग्रीन कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्रीन कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल. तो ये इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट is a straight line parallel to time axis. समझ सारे बच्चे लिखो. For a rested body, शाबाश सभी बच्चे लिखो. For a rested body, displacement time graph is a straight line, parallel to time axis, parallel to टाइम एक्सिस. ये देखो, ये वो ग्राफ है बच्चे. ओके, तो सभी बच्चों ने याद रखना है, अगर आपको बोल दे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ और बॉडी रेस्ट पर हो, तो आपने एक ऐसे ग्रीन कलर की लाइन बना देनी है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो. दूसरा ग्राफ, अगर आपको बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन दिखानी हो, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन तो कैसे दिखानी है? ध्यान से सुनो. एक तरफ डिस्प्लेसमेंट जिसका यूनिट मीटर है, एक तरफ टाइम जिसका यूनिट सेकंड है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया O पॉइंट. तो ग्राफ कैसा आएगा बेटे इसमें? ऑलवेज रिमेंबर, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और द बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन हो तो ग्राफ ऐसा आता है. इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ये टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, इसको बोलते हैं लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ. सभी बच्चे लिखो, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ये कब होता है बच्चे? कौन सा ग्राफ है ये? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. किस बॉडी के लिए? जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो. यूनिफॉर्म मोशन में. कोई बच्चा बोलता है सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जो बॉडी जिधर को जा रही है उधर को ही जाती रहती है, डायरेक्शन चेंज नहीं करती, और ना ही चलते चलते तेज होती है, ना ही चलते चलते स्लो होती है. बॉडी नाइदर गेट्स फास्टर नॉर गेट्स स्लोअर नॉर चेंजेस द डायरेक्शन. उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. अगला पॉइंट, अगर मैं अपने बच्चों से इधर बात करूं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स है, यहाँ टाइम इन सेकंड है, और इस बार मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता रहा हूं. नॉन यूनिफॉर्म. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप कैसे भी दिखा सकते हो, बस ये वाला ग्राफ नहीं दिखाना. बस नॉन यूनिफॉर्म में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना तो ये दिखाना है ना तो ये दिखाना है. कैसे भी दिखा दो, जैसे ऐसे दिखा सकते हो, ये भी सही है. ओके, कोई बच्चा कहता है सर मैं तो ऐसे दिखा दूंगा, ऐसे दिखा दूंगा, ये भी सही है, ये भी सही है. कोई बच्चा कहता है सर मैं तो ऐसे ग्राफ दिखा दूंगा, ये भी सही है. तो बस ये दोनों ग्राफ नहीं होने चाहिए. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में
ये ग्राफ होते हैं, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ ग्राफ, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में दो बॉडीज का मोशन दिखाऊंगा, दो बॉडीज का। एक बॉडी ये दिखाई बेटे, देखो, एक में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रहा हूं अभी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। देखो स्ट्रेट लाइन बेटे, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वेलोसिटी हमने सेट कर दी, जैसे कि v1। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती वो है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, टाइम कुछ भी हो, वेलोसिटी ऐसे रहेगी। तो आप कहोगे सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सभी बच्चे लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ is a straight line, is a straight line, ये वाली, parallel to time axis, parallel to time axis। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था सर पैरेलल क्या होता है। पैरेलल का मतलब है ये मजेंटा और येलो कलर वाली जो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनमें आपस में जो गैप है सारी जगह पे बराबर होगा। यहाँ भी v1 की दूरी पर, यहाँ भी v1 की, यहाँ भी v1, यहाँ भी v1। अगर ये दूरी कांस्टेंट रहे तो इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो याद रखना, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो ये ग्राफ आता है, लेकिन अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो ये तीनों ग्राफ सही हैं, कोई भी बना सकते। देखो कितना, ये ग्राफ आपको याद करना चाहिए। कोई बच्चा कहता है सर मैं ऐसा बना दूंगा तो वो भी सही है, बिल्कुल वो भी सही है। बस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में एक तो ऐसा नहीं होएगा, एक तो ऐसा नहीं होगा, ये दो नहीं हो सकते। सभी बच्चे नोट्स कर लें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। शाबाश। कोई बच्चा बोले सर और भी कुछ मोशन में स्टडी करना है, बिल्कुल करना है। तो मैं अगला पॉइंट बताने लगा हूं, लिखोगे मोशन ऑफ टू बॉडीज इन वन ग्राफ, इन वन ग्राफ। तो बच्चे ऐसे बनेगा वो, देखो इधर टाइम लिया सेकंड में, इधर डिस्प्लेसमेंट लिया मीटर्स में। ओके, और याद रखने वाली बात है, अगर टीचर दो बॉडीज का ग्राफ बनाता है, जैसे ये बना दिया, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बना रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन। कोई बच्चा बोलता है सर यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करना हो तो कैसे करना होगा, कैसे करना होगा, ए मोशन इन विच वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ए मोशन इन विच वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होती है वो जितनी हो उतनी ही रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है, ना बॉडी तेज होती है ना ही स्लो होती है, और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जो बॉडी जिधर को जा रही है उधर को ही जाती रहती है। तो मान लीजिए एक बॉडी का ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, नंबर वन येलो कलर से, और दूसरा ग्राफ मैंने बना दिया व्हाइट कलर से, नंबर टू। तो कोई बच्चा बताएगा इन दोनों ग्राफों में से
कौन सी कार नंबर 1 ज्यादा तेज चल रही है या कार नंबर 2 तेज चल रही है? दोनों में से कौन सी कार ज्यादा तेज चल रही है? किसकी वेलोसिटी हायर है? एनीबॉडी? हाँ, ब्रह्मपुत्र के बच्चे आ जाओ बेटे माइक पे। ओनली ब्रह्मपुत्र स्टूडेंट्स आर डेयरिंग टू टेल, बाकी कोई भी नहीं बता रहा। बताओ बेटे इन दोनों में से कौन सी कार तेज चल रही है? हाँ जी, दोबारा से बोलो। है बेटे? अच्छे से नहीं। बेटे माइक को ऑन करके थोड़ा सा रुका तो करो, फिर बोला करो। नहीं सुनता, अच्छे से नहीं सुनता। यूलर, यूलर बेटे आप बताओ, माइक ऑन करो क्लास का। यूलर में माइक ऑन करके थोड़ा सा रुकना फिर बताना। छोटे बच्चे हैं, माइक पे थोड़ा बोलना नहीं आता, बिल्कुल पास करा करो और थोड़ी देर रुका करो फिर बोलो। बोलो बेटे कौन सी? 1। एक यूलर का बच्चा कह रहा है 1 तेज चलेगी। नहीं बेटे, ध्यान से याद रखना, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, आप इसको ऐसे मान लो कि ये दोनों पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल होएगा? सभी बच्चे कहेंगे सर सेकंड वाली पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल है, फर्स्ट वाली पे आसान है। जिस पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल हो वही फास्ट होती है। तो याद रखो, वेलोसिटी ऑफ कार नंबर 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ कार नंबर 1। पहला लर्निंग पॉइंट बना लो बेटे, बना लो। दूसरा पॉइंट, कोई बच्चा बताएगा कि क्या कार नंबर 2 1 को ओवरटेक करेगी या नहीं, आगे निकल जाएगी या नहीं निकलेगी? कौन बच्चा बताएगा कि कार नंबर 2 जो है वो 1 से आगे निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो इसके लिए आपने देखना होता है बेटे, ये दोनों ग्राफ अगर कट कर रहे हैं, अगर यहां कट कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो गारंटेड है जिस पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल हो व्हाइट वाली, वो वाली कार आगे निकल जाएगी येलो वाली कार से। क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो ग्राफ दिए होते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, तो कार नंबर 2 पहले को ओवरटेक कर जाएगी, आगे निकल जाएगी। कोई बच्चा कहता है मान लीजिए सर व्हाइट लाइन ऐसे ना बना के ऐसे बनाई होती तो, फिर से देखो, ऐसे ना बना के व्हाइट लाइन ऐसे बनाई होती तो, तब कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता ही ना, फिर ओवरटेक नहीं करेगी। तो आप कहोगे ये वाले पॉइंट पे बच्चे क्या बोलोगे? एज देयर इज as there is point of intersection, as there is point of intersection, therefore car 2 overtakes car 1, overtakes car 1, कार 1 से आगे निकल जाएगी, व्हाइट वाली कार येलो वाली कार को पीछे छोड़ देगी। अब वो बच्चा बोले सर बता सकते हो कितने कितने टाइम पर ये क्रॉस कर देगी? तो ध्यान से सुनो, क्रॉस करने के लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वहां से परपेंडिकुलर लाइन लगाओ और वो टाइम एक्सिस को कट करेगी यहां पर। इस टाइम को नोट कर लो, इस टाइम को नोट कर लो, टी डैश को। ओके, तो जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे परपेंडिकुलर लाइन निकालो टाइम एक्सिस के ऊपर, टाइम एक्सिस के ऊपर। तो जहां पर वो कट करेगी, जीरो से लेकर वहां तक का टाइम आप लो। जैसे यहाँ मार्क लगे होते हैं पेपर में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6, मान लो यहाँ 6 सेकेंड लिखा हुआ है, तो आप कहोगे 6 सेकेंड के बाद, कार नंबर 1 के 6 सेकेंड के बाद कार नंबर 2 उसको ओवरटेक कर देगी। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? टी डैश को क्या लिखोगे? टी डैश को लिखोगे टाइम आफ्टर मोशन ऑफ, time after motion of car number 1 such that car 2 overtakes it,
कार नंबर 1 को टी डैश टाइम के बाद ओवरटेक कर देगी। नोट कर लो ये सारे बच्चे नोट कर लो, कौन सी कार आगे निकलेगी कौन सी पीछे। अब एक और बात देखो, ग्राफ की मदद से हमने कैसे स्टडी करना है मोशन को, एक और देखो। सभी बच्चे देखो, अगर मेरे पास ये ग्राफ दिया हो कौन सा, मान लीजिए ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और ये हो गया हमारा ओरिजिन 0। गॉट इट बेटे। अब आपको पेपर में मान लो ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, पेपर में मान लो बच्चे ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन। और आपको यहाँ पर टाइम में ऐसे टाइम लिखा हुआ है, देखो गौर से, यहाँ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9, ऐसे ऐसे सारे मार्क लिखे हुए हैं। मान लो यहां तक का टाइम है T1 और यहां तक का टाइम है T2। और मैं आपसे पूछूं इतने टाइम को क्या बोलोगे, इतने टाइम को जिसमें टीचर ने ब्रैकेट बनाई है, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर ये ब्रैकेट वाला टाइम पता कौन सा होएगा, इसको टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं, टाइम ड्यूरेशन। मैंने कहा टाइम ड्यूरेशन तो ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर आएगी। बच्चा बोलता है सर T2 में से T1 को माइनस कर दो, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। फिर क्या करना है, मेरे को इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। और मेरे को पेपर में ये बता रखा है कि यहां तक वेलोसिटी है V0, ये बता रखा है पेपर में। तो अब देखो मैं इसमें करूंगा कैसे, ध्यान से सुन लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं अब, जो टाइम ड्यूरेशन उसने पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम, ये मेरे से पूछा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा बेटे, ध्यान से सुनना, मैं यहां से टी, डेल्टा टी के दोनों पॉइंटों पे यहाँ पे ग्राफ ऐसे वर्टिकल एक्सिस कट करूंगा, जो कि ग्राफ को कट कर देंगी। जब ये ग्राफ को कट कर देंगी तो इतने पोर्शन का मैं एरिया निकाल दूंगा, एरिया, इस एरिया, ये जो एरिया होएगा ना बेटे, दिस एरिया, ये एरिया अगर मैं निकालूं तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। एरिया विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे कहते हैं सर वो लेकिन निकलेगा कैसे, मैं कहूंगा बेटे गौर से देखो ये क्या शक्ल है, इसको क्या बोलते हैं। एक बच्चा कहता है सर ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो मैंने कहा बेटे रेक्टेंगल का फार्मूला नहीं आता एरिया का, सर आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड और ये टाइम ड्यूरेशन हो गया 5। ये इतनी चीज 5, देखो जहां टीचर का मार्कर चल रहा है, मान लीजिए ये 5 है, मान लीजिए ये 10 है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा 50, 50 मीटर आ जाएगा। गॉट इट। तो लर्निंग पॉइंट क्या है, लर्निंग पॉइंट ध्यान से सुनो, लर्निंग पॉइंट क्या है, एरिया एनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन एरिया किधर को एनक्लोज करना है, इधर को कि इधर को, टाइम एक्सिस के ऊपर, ऑन टाइम एक्सिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सभी बच्चों को ये नोट करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट।
शाबाश। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज कम टू द असाइनमेंट एज फार एज पॉसिबल। जितना जल्दी से जल्दी हो सके असाइनमेंट पे वापिस आओ। शाबाश। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बेटे? ए बॉय रन एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 मिनट? बोलता है स्पीड स्पीड ऑफ बॉय कितनी देर की है बेटे? 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? टाइम 2 मिनट। स्पीड का सिंबल क्या होता है? v। टाइम का सिंबल है t। और हमसे पूछता है डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क, इसको हम d लिख देते। कोई भी बच्चा मेरे को क्लास में बताए कि कौन सा फार्मूला लगाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कौन सा फार्मूला लगाऊंगा बेटे? एनीबॉडी? एनीबॉडी? सारी क्लासों में से एक भी बच्चा? हाँ हाँ, शाबाश। यूलर में एक बच्चा, रेड टी शर्ट, आजा बेटे। सिर्फ एक बच्चा हाथ खड़ा कर ले यूलर में। देखते हैं आप सही करता है कि नहीं। एक और बच्चा आर्किमिडीज में, येलो टी शर्ट, आ जाओ बेटे। Raise hand. Actually, they are not visible in camera. In Euler class, so many hands raise hand. ओके ओके मैम। ओके ओके। So ma'am says कि camera is not properly covering all the students. Many Yes. students have raised the hands in the Euler section. Excellent. You want to give answer? Please listen. बहुत अच्छे। फॉर्मेट में भी काफी बच्चे हैं। हाँ तो शाबाश। शाबाश, बहुत अच्छे। तो काफी बच्चे हाथ खड़ा करने लग गए। आप बेटे हम जो फार्मूला लगाएंगे ना वो ये लगाएंगे। सभी बच्चे नोट करो। स्पीड इज इक्वल। वेरी गुड, वेरी गुड। यूलर में से एक बच्चे ने बताया, सरदार बच्चा है, बहुत प्यारा सा, शाबाश। शाबाश, बिल्कुल सही बताया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको इधर ले जाएंगे और फार्मूला क्या बनेगा? ऐसे। तो देयरफॉर डी कितना आएगा बच्चे? v इंटू टी। अब बच्चा कहता है सर क्या मैं इसको यहां रख दूं उठा के? तो मैं कहूंगा बेटे आपने जब भी यहां पर इनकी वैल्यूज रखनी है तो पहले चेक करना है क्या वो एसआई यूनिट्स में है। स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल सही। तो आप इसको रख सकते हो, तो 5 को रख सकते हो। फिर एक बच्चा कहता है सर क्या मैं टाइम को रख दूंगा यहां पर? मैंने कहा बेटे टाइम को रखने से पहले देखो क्या ये एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, मिनट? सभी बच्चे कहते हैं नहीं सर नहीं, इंटरनेशनल यूनिट तो सेकंड थी, सेकंड। तो 2 मिनट में कैसे सेकंड निकालेंगे? 2 इंटू 60 यानी कि 120 सेकेंड। अब बच्चा बोले सर अब मैं रख सकता हूं? बिल्कुल 120 सेकेंड रख सकते हो आप। तो जैसे ही आपने इसको निकाला, कौन बच्चा बताएगा कितना आंसर आएगा? जल्दी, विदाउट टचिंग पेन, कितना आंसर आएगा? कितना आंसर? आर्या भट्टा, रेड टी शर्ट, आजा। स्पेक्स वाला बच्चा, आर्या भट्टा, सेंट्रल लाइन, स्पेक्स वाला बच्चा। बहुत अच्छे बेटे, 600 मीटर। ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर। but let me rewrite. He says 3 hour 30 minute
ऐसे दे रखे बच्चे उसने। अब वो कहता है कि इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो, इस टाइम को इन सेकंड्स कितना होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। जानते हो कैसे करोगे? ये वाला क्वेश्चन मैं ही कर देता हूं, चलो। आपको ऐसे करना है बेटा, देखो आपने डेल्टा टी लिखा, लिख दिया सर। फिर ये जो 3 आर है इसको ऐसे लिख देना है, 3 × 1 आर, ऐसे। फिर ये जो 30 मिनट है इसको लिख देना है 30 × 1 मिनट, ऐसे लिख के बीच में लगा देना है प्लस का निशान। अब आगे क्या करना है? अब आपने देखना है कि टीचर ने आपको करा रखा है 1 आवर कितने सेकंड्स के बराबर होता है। तो आप देखोगे टीचर ने सिखाया था 1 hour 3600 सेकेंड, सेकंड्स में कन्वर्ट करना ना इसलिए। और टीचर ने क्या सिखाया था, एक ये भी सिखाया था 1 minute = 60 सेकेंड। तो इसकी वैल्यू भी रख दो, उसकी वैल्यू भी रख दो। तो नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा टी 3 × 3600 सेकेंड प्लस 30 × 60 सेकेंड। बस इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो बच्चे, कितना आ जाएगा? समझदार बच्चा कैलकुलेशंस करेगा अगर ध्यान से, तो बोलेगा सर ये इतना आएगा और ये इतना आएगा, इतना सेकंड बनेगा, मैं इसको ऐड कर दूंगा। जल्दी से ऐड करके बताओ कितना आंसर आता है। देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है, आंसर बताओ जल्दी से। आया बेटा, माइक पे आया, येलो टी शर्ट, येलो टी शर्ट सेंट्रल लाइन। आजा बेटा जल्दी देखते हैं, और किसी का हाथ नहीं पड़ा। हाँ, आर्किमिडीज में येलो टी शर्ट वाली गर्ल, यस, जिसने आई कार्ड डाल रखा है। आजा आजा। 260 कितना बेटे, फिर से बोलो। 12600। शाबाश बच्चे, 0 0। हाँ आप भी बताओ, आर्किमिडीज वाला बच्चा माइक ऑन करो। भाई आर्किमिडीज 600। 600 कैसे आ जाएगा बेटे इसका ऐड करने पर? 1600। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ, शाबाश। ये ब्रह्मपुत्र और आर्किमिडीज में तकड़ा कंपटीशन। यूलर में भी एक बच्चा है सेंट्रल लाइन, आजा बेटे ब्लू टी शर्ट, आजा आजा जल्दी माइक से बताओ। और वाह, फॉर्मेट में भी काफी बच्चे हैं, तो इसको हम करते हैं। सर 12600। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये हमारा आ गया बेटे आंसर, शाबाश। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन, A train covers 90 kilometer in 1 hour 5 minutes. इसका स्पीड बताओ। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हमने भी तो सेम आंसर बोला था। हाँ बेटे मेरे को सुन गया, आपको भी शाबाश, आपको भी बहुत ठीक अच्छा। है। अगले अगले क्वेश्चन में कंपटीशन करते हैं, चलो सारे सेक्शंस का कंपटीशन है, देखते हैं कौन बच्चा करता है इसको। क्वेश्चन नंबर मैं समझा देता हूँ। डिस्टेंस जो कवर कर रही है ट्रेन वो है 90 किलोमीटर, और टाइम टेकन है बेटे, टाइम टेकन है 1 hour 15 मिनट, 1 hour 15 मिनट। एक ट्रेन है जो कवर्स, ट्रेन कवर्स इतना, शाबाश। अब वो कहता है आप बताओ इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन। लेकिन एक बात याद रहे, वो निकालना तो है पर यूनिट, कौन सी यूनिट में बताना है, इन मीटर पर सेकंड। जल्दी से बताओ, कंपटीशन। अरे वाह, आर्किमिडीज ने कर भी लिया। आ जाओ बेटे, सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन आर्किमिडीज। अरे ये आर्यभट्टा ने भी कर लिया। आ जाओ। ये फर्स्ट लाइन में एक बच्चा येलो टी शर्ट वाला इधर, सर 20 मीटर पर सेकंड। एक बच्चा कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। और देखते हैं और कौन बोलता है, आर्यभट्टा में से कोई बच्चा। हाँ आओ तो सही, माइक पे आओ बच्चे, येलो टी शर्ट माइक पे आओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ। यूलर में ग्रीन टी शर्ट सरदार बच्चा, माइक पे आओ। सर 20 मीटर पर सेकंड।
20 यूलर, आ जाओ ग्रीन टी शर्ट। 20 कह रहे हैं, देखते हैं किसका सही है। तो आप कहोगे सर जो स्पीड होती है ना, यानी कि वो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन होती है सर, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ये कुछ आपको पता होना चाहिए सर। बच्चा बोलेगा, मैंने कहा ओके, दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस। टी को इधर ले जाओ, नहीं टी सॉरी स्पीड ही तो निकालनी है, तो दैट इज डी अपॉन टी। तो डी को रखेंगे 90 किलोमीटर, पहली बार ऐसे ही रख सकते हो 1 आवर 15 मिनट, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में। जिन बच्चों को नहीं आता ध्यान से देखो कैसे करना है। 90 इंटू यहां पर 1000 मीटर बन जाएगा बेटे, और 1 आवर के कितने मिनट बनते हैं, सेकंड बनते हैं 3600, और 15 मिनट के कितने बनेंगे 15 इंटू 60, इतने सेकंड। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा 9 1 2 3 4, और नीचे देखो बेटे ये बन गया 900, इसमें ऐड करेंगे 006 ना 5 सर और 4, ऐसे बनेगा। तो सारे बच्चे जो 20 मीटर पर सेकंड कह रहे थे उनको मेरी तरफ से शाबाश। जिन बच्चों का आंसर 20 आया था, क्लैपिंग फॉर देम, शाबाश शाबाश। जिनका 20 आया था प्लीज क्लैप फॉर योर सेल्फ, क्लैप फॉर योर सेल्फ, इट वॉज ए गुड क्वेश्चन। यूलर में बहुत सारे बच्चे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अरे आर्यभट्टा में भी काफी सारे हैं, ब्रह्म गुप्ता में भी काफी सारे हैं, लेकिन गाज में नहीं है। गाज में बच्चे कम है। ओके गाज में भी हैं, 5 बच्चे हैं, 6 6। ओके बेटे, नाउ लेट्स प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी कंपटीशन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कौन बच्चा पहले करता है। कन्वर्ट 180 सेकेंड इंटू मिनट्स, बस मिनट्स में लिखना है बस, बाकी काट दो, कुछ एक्स्ट्रा छपा हुआ उसको काट दो। कन्वर्ट 180 सेकेंड्स इंटू मिनट्स, कौन बच्चा बताएगा। अरे वाह, ब्रह्मगुप्ता में बहुत सारे बच्चे, और आर्किमिडीज में तो कमाल ही हो गया ना। ओए गाज में सारी क्लास ही इकट्ठी होगी, गाज में इतने बच्चे, शाबाश शाबाश। लेकिन मेरे को फॉर्मेट में से बताए कोई बच्चा, मैं तो फॉर्मेट में से पूछूंगा, फॉर्मेट के बच्चे से पूछना है भाई मैंने। रेड टी शर्ट वाला कोई भी बच्चा बताए फॉर्मेट में से, फॉर्मेट में से रेड टी शर्ट वाला कोई भी बच्चा माइक पे। वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्चा आ रहा है माइक पे। सर 3 मिनट। क्या बात है, क्या बात, 3 मिनट। एक बच्चे ने बोला सर आपको पता है आपने हमें करवाया था 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मैंने कहा ठीक है, कहता अब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करके देखो। मैंने कहा ओके बेटे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो कहता सर देखो अब क्या बनेगा, 180 सेकेंड बनेंगे और इधर 3 मिनट बनेंगे। आ गया आंसर आपका। तो 180 सेकेंड को जब कन्वर्ट करते हैं 3 मिनट बन गया। बहुत अच्छे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है 5400 सेकेंड। अब मुश्किल है भाई, ये कितने आवर्स के बराबर होगा। देखते हैं कौन बच्चा करता है, जल्दी कंपटीशन। अरे वाह, आर्किमिडीज ने तो कमाल कर दिया भाई। आर्किमिडीज माइक पे आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ माइक में। येलो टी शर्ट, येलो टी शर्ट। आगे से मैं ये गर्ल्स में येलो टी शर्ट आए ना, चलो बॉयज में से आ जाओ कोई बात। येलो मतलब माइक ऑन करो पहले, आर्किमिडीज माइक ही ऑफ है आपका। हाँ बताओ। 1 hour 30 minutes। ओके ओके, मैंने आपका आंसर सुन लिया, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। देखते हैं और कौन बच्चा बताता है। आर्यभट्टा, ब्लू टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट आर्यभट्टा, कम ऑन द माइक। शाबाश।
1.5 hours. ओके, चलो देखते हैं दोनों बच्चों में से किसका सही है। सबसे पहले इसको ऐसे लिख दिया करते हैं, 5400 इंटू 1 सेकेंड, और इधर अभी क्वेश्चन मार्क चलता है हमारा, ये सारी चीज इसके बराबर आ गई है। उसके बाद आप देखो, टीचर ने आपको रफ वर्क आपको सिखाया हुआ है 1 hour 3600 सेकेंड। कोई बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें 1 सेकेंड की वैल्यू पुट करनी है, ना कि 1 आवर की। तो रफ वर्क में 1 आवर डिवाइडेड बाय 3600 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड की वैल्यू पुट करनी है बच्चे। तो 5400 और 1/3600 कितने आर हो गए, और तो ये कितने हो गए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ गया, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1.5 आर। ये आंसर सही है। एक बच्चे ने ना ऐसे आंसर दिया था मेरे को, सर 1 hour 30 minute। ये वाला आंसर टीचर गलत कर देगा पेपर में, क्योंकि उसने मांगा ही आवर्स में है। आप मिनट में कैसे लिख सकते हो पेपर में। 1.5 आवर को टीचर सही करेगा, हालांकि वो सेम आया लिखने में, ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 hour 30 minute, लेकिन टीचर नीचे वाले को कट कर देगा, ऊपर वाले को सही करेगा, और टीचर आपको बोलेगा मैंने तो आवर्स में पूछा, आप मिनट में कैसे लिख सकते हो। इस बात का ख्याल रहे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटे। एक कार कवर्स 400 मीटर इन 50 सेकंड, स्पीड बताओ। किलोमीटर पर आवर में बता रही है, ये मुश्किल है क्वेश्चन, मुश्किल है, देखते हैं कौन करता है। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 50 सेकंड, स्पीड बतानी है, लेकिन स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बताना बेटे, किलोमीटर पर आवर। शाबाश, हरी अप। सभी बच्चे बोलेंगे सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 400 मीटर अपॉन 50 सेकेंड। तो ये कट करके कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। फिर टीचर ने सिखाया था 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है, पर हमने तो यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू पुट कर ली है। तो फिर कैसे पुट करेंगे, तो इट बिकम्स रिवर्स आ जाएगा, 18 ऊपर 5 नीचे, 18/5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। उसकी वैल्यू रखी, तो 8 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आर आ गया बच्चे। आगे क्या बनेगा, 8 इंटू 3.6 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई करो। इतना, कितने बच्चों का इतना आया था, जरा हाथ खड़ा करो, जल्दी खड़ा करो। अरे वाह, ब्रह्मपुत्र में 1 2 3 4 5 10 15 बच्चे, ब्रह्मपुत्र में 15 में, 15 में 12, आर्किमिडीज में 20 स्टूडेंट्स, गाज में, गाज में 20, वेरी गुड, यूलर में 10, फर्मेट में, फर्मेट में 12, ब्रह्मपुत्र में 15। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। तो बाकी 4 क्वेश्चन बचे हैं बेटे, 11 12 13 14। ये आपने घर से करके आने हैं, आप ये आपने ही करने हैं, मैंने नहीं कराने। आप इतने सारे क्वेश्चन करा दिए आप। लेट्स स्टार्ट द इंग्लिश क्लास नाउ। So, good afternoon, everyone. How is everyone? So, yes, you can take your time, like a minute, to put back your science stuff, and then take out your English and just look at the worksheet. Okay.
So just look at the worksheet and let me quickly clear this. Everybody has noted down this? I hope nobody requires it. Okay. So we can now. So today we are going to do reading comprehension. Okay. Who will tell me the meaning of reading comprehension? I remember I had told you earlier also. What does reading comprehension means? What does it mean? Who will tell me? I think so. I remember I had told you what does it mean. Yes, very good. Brahmgupta, middle row, first bench. The girl in red, she's raised her hand. So what does reading means and what does comprehension means? Reading means when we thoroughly read a passage or anything. Reading and comprehension, we have an unknown passage and we have. Very good. Comprehension means understanding. Okay. So understanding. Comprehension, the word means, like I can ask you, like when I teach something and I'll ask you, have you comprehended? Like, have you understood? So when I say reading comprehension, that means you will be given some unknown passage. Okay. Something you've never come across. And we will give you that and you will read it. And then have you understood? Have you comprehended? And then there will be a couple of questions based on it. Okay. So these questions can be simple, direct questions. Okay, which you all are very good at answering. Like, you will look for information in the passage and you will directly you will locate the information and you will write. Or while you're reading, you have understood the information and you will just write. That is called direct. Then there are implicit. Okay, something which you have to understand. Okay, inferral questions. Okay, so like, you have to infer. You have to understand. Through the text, you have to understand what it is trying to convey. So I will start gradually. I'll take you to that path. Like, probably you people are doing it, but I'll do it in my own way. So we will start today with a simpler one. And then one by one, we will go like, what is the purpose of this? Why this particular passage has been written? Then what does the first paragraph convey? What does the second paragraph convey? What does the third convey? Then certain word meanings in context and like, hot questions. Hot questions means higher order thinking. They are called HOT. Okay, HOTs. So today I'm going to give you one hot. Okay, these hot questions, they are higher order thinking. So where you will apply, which is called application. Okay, you will apply your brain, you will apply the knowledge you already have and the knowledge you gain from here, and you will give your answer. Okay, so this is how we will process. So it is like perceiving, processing, understanding, reasoning, so many processes going on time. And that is how we activate our brain. Okay, that is how we activate our brain and that is how we learn. And language is so important because to learn other subjects also you need language. Okay, and you need to know the words, you need to know the contextual things and everything. So here it's a very, very simple passage, extremely simple, rather I would say. Okay, some facts are given, they are stated here. Just go through them. Just go through them. Things to know before you donate blood. Okay, so when people, everybody knows what is blood donation. Okay, and like this is a poster, and there are certain things you should know before you go to donate blood. Okay, it's not. I cannot donate blood because if you are like, if you're on some medication or if you're past 60, then you cannot donate blood. Okay, so you have to be in an age group. You have to have like no medication, no chronic illness. Okay, so let's start. Start reading, and then I will come back to you for the first question. Okay, start reading, everyone.
Yes. And this is your kind of like, your own, no discussion with your friends, nothing. You have to do it on your own. And then I have quite a few more questions also based on this. Okay. And the words you do not know the meanings, you can underline them. You can underline them. Okay. The new words you have come across, or even if you have like heard about these words, and even if you use them, but sometimes we keep using a word, but we do not know the exact meaning, what it means. Okay. Brahmgupta, why there is some movement, beta? Who is loitering around? That boy who was loitering. Yes, sir. Why is he like not focusing on his work? Please focus on your reading. Now I have just now noticed that the first question, which body is creating awareness about blood donation in the poster? So that particular thing has been removed from here by making the worksheet, because literally at the bottom it was a small little source was given. So obviously you can't answer this question, so I will, or you can just think of any answer, like what can you think about, who would have done? Okay, which body is creating awareness about blood donation in this poster? Okay, so we don't know, like that name which was given, it was like minuscule. So now it is not there. So you can think about which body would give this information. You're thinking caps on. Okay, who would like to tell me the first answer? Which body, okay, or organization will give this? Okay. Euclid, then girl in yellow t-shirt on my right. Yes. Which body will give this information? This is like understanding. Okay. This will be your inference question, inferring. Like who will give this information? I think. Or who? I think. Who? Healthy. I can't understand what you're trying to say. Actually, I am unable to, I don't know why, but unable to understand. Sorry, beta. Let me call this one from Brahmgupta. Maybe she's more clearer. Sorry, bacha. Okay, you come. Brahmgupta, middle row, first bench. Come. Who will give this information? Which body? Who will give? Could you please repeat it? I can't understand what you're trying to tell me.
Now see, this information can come from police department. Yes or no? Will police department give this information? No. Okay. This information will come from the blood bank society. Okay, blood bank society, where people go for, like, blood bank or Red Cross, because Red Cross also does these kind of things. They have these camps, okay, blood donation camps. So blood bank society, so it can be, this information can come from blood bank. Okay, so some organization which is, like, which is going to, which usually collects blood, or which, like, has camps for blood donation. So blood donating wherever, like, or Red Cross can do this in India. These are the two societies that can do, or probably some hospital, okay, where you go as a blood donor. In hospitals also they take your blood. So basically this is your understanding. Even though the name was not given here, you understood this cannot come from police department. This cannot come from some marketing organization. This cannot come from the advocates. This cannot come from anyone else. Okay? Who will put such a poster? So this is called using your previous knowledge also to understand. Next. Which of these documents is not required to be carried for blood donation? It's very clearly given here, very clearly. Archimedes, okay, on my left, there is a child in yellow t-shirt. Okay, come out. Okay, obviously there are two children. Okay. Ma'am, driving license. Yes. It's driving license. Okay. It was not required. It's very clearly mentioned what are the things that are required. Okay. Next. One needs to stay hydrated before the blood donation. One needs to stay hydrated before the blood donation. Okay, Euclid, a red t-shirt on my right, last bench, I think so. Yes. Do you need to stay hydrated? True. True. Before the blood donation. Okay. It's clearly written here that you have to eat well, eat and drink enough before the donation, and make sure to stay hydrated afterwards as well. Yes, so it is true. Okay, it's not clearly given. You might, like, you might mistake it that, okay, only after, but it's written eat and drink well. I hope you know the meaning of hydrated. How many of you know the meaning of hydrated? Hydrated. Okay, quite a few. Very good. Gauze, I can see on my, okay, middle row, first bench, green t-shirt, Aja. What is hydrated? Stay hydrated. What does it mean? What does it mean? Anyone? That's an advice we give to everyone. Condition of our body. What? What? Could you repeat? Condition of our body to get a proper amount of water. Okay, so hydration is, like, when you drink enough water. Okay, but there are other meanings also. Hydration. You keep your skin hydrated. That means apply moisture. Okay, apply some kind of cream, moisturizing cream. So that is keeping your skin hydrated. Okay, so that is your skin hydrated. Keep yourself hydrated means drink some kind of fluids. Okay, you have to drink some kind of fluids so that you can keep your self hydrated. So drink water.
or drink fluids to replenish. Now, when you when you have vomitings or you have loose motions, okay, diarrhea hota hai, ya you have a vomiting bout. People give you a lot of that oral suspension is there, which you pani mein dal ke it is sweet and little salty. So why all these things are given to you? To keep you hydrated. Otherwise, when you vomit or you have diarrhea, okay, like you have loose motions, and if you don't keep your body hydrated, you can get dehydrated, and people can even die of dehydration. They can even die. So it's such a serious issue. Okay, so here we go. Next question. Very easy one. These are very easy ones. Okay. How much time needs to elapse after the last blood donation? How much time needs to elapse? Okay. Euler. Okay. On my right, last bench, yellow t-shirt. Euler. आजा जल्दी से आजा. 24 hours. 24 hours? How much time needs to elapse after the last donation? 24 hours? Read again. You missed something. Fermat. Okay. Middle row, blue t-shirt. Third bench, I think so. Yes. How much time needs to elapse? Wait, you read the question again. 56 days. Same question. How much time needs to elapse after the last blood donation? Okay, I told Euler, I called someone from Fermat. I said Fermat. Yes. From Fermat, one of you can come. Alright. How much? Okay. Archimedes, middle row. This boy in yellow t-shirt who just got up. Aja. None of the above. Huh? Which one? None of the above. Yes, none of the above. None. Because this 56 hours is just to waylay you. Okay? It is actually 56 days. So a person who has just read quickly will see 56 hours, and you might probably. So how many of you got tricked? Or you were all smart enough not to get tricked? Okay, so here we have to read very well. Okay, so it is none of the above. So the time needs to elapse, and I'm 100% sure you all have understood the meaning of elapse. What does it mean, elapse? And it must be a new word you came across. And that also I'm 100% sure. What does elapse means? Okay, gauze. That boy in blue t-shirt, he wants to tell me the meaning of elapse. Aja beta, come. Come. Yes, gauze. That boy in blue t-shirt, you raised your hand. Come. Yes. What does elapse means? I'm sure you are able to understand the word. What time period? What? Time period. Yes, time. So the time should be the time which has passed, elapsed. Okay? The time elapsed. So it is like the time should pass. That is exactly what it means. Passing of time. And you should all keep writing the meanings so that you know the words. And I'm sure you're not, after the class, you don't make a ball of this sheet and throw it in the trash can. No. You have to put it in a folder and keep it till the end of the year. And from time to time, you have to take it out and you can just go through it and you will see how wonderful it is. You will start remembering a lot of things which you must have put it at the back of your mind. Okay. Now, the blood donation takes blank minutes. Okay. Now, see, this question is not very
to the point. Okay, so there can be two answers. There can be two answers. One will be like an approximation, okay, like the time which is required before, which is not given, but you can assume the time for the process and the time afterwards. So the whole thing. And one can be just the process. Okay, just the process. So I want both the answers. I want both the answers. And this question should have been framed in a better manner. Okay, sometimes you will get such questions which are not very well framed, which which will put you in a dilemma. कि अब क्या answer do should I give about the whole thing, or I should only give about the main thing? Okay, so in that case, you can write both the answers to avoid getting your marks cut. Okay, so who will tell me that? I can see a lot of hands raised. Archimedes on my left, blue t-shirt. Aja. Aja. Consider both the time that takes to for blood donation, and after blood donation it's 15 to 20 minutes. Okay. So there should be a before also. Okay, before what they do is there is a process. When you go, they straight away don't take you to the table and poke a needle in you. No, they will measure your blood pressure. They will measure. Okay, then they will sometimes they will even take your blood test in case they take your weight. Okay, so a lot of things. So probably 15 minutes before, 10 minutes on the bed, and then probably rest time. Okay, so together we can approximately say half an hour, 30 minutes. And for the process, just the blood, sticking the needle in and taking the blood. How much? It's clearly given there. Okay, Archimedes. Oh, okay, Fermat, I can see hands raised on my left. Okay, yellow t-shirt, that girl. You can come. So for the direct process, just the taking out of blood, it is 10 minutes. Okay. So both the answers you should write here. If you get such ambiguous questions, which are not on the dot. Okay, next one. Next one is, and you have to state also, mention that for the whole process, before, after, and the blood donation, it will take around approximately 30 minutes. And just for that process, it will take 10 minutes. Okay. So it is very easy and harmless for a healthy person to donate blood. There is 5 to 8 liters of blood in a healthy man. Giving away a small quantity of this will not do him any harm. The human body is a remarkable machine. Whatever blood has been taken from it is soon replaced by new blood, provided the blood loss is small. Okay. Now, from the passage, which of the following statements best reflect the attitude of the author? Which one from this above passage? Now you forget about the poster. Okay. All the questions. Yes, Vita. Ma'am, what is the meaning of pursing? What is the meaning of? Pursing. What is the meaning of? Piercing. Piercing. Okay. Piercing is something which goes into your body. Chubna. Okay. Or there is another piercings also. I will come to that. Okay. So piercing here will be the needle piercing your skin going. But piercing is used in many different ways. So I have a question for you on that too. Okay. Which I'm going to ask you now. So basically, this you have to understand the piercing of the needle. When you have a sharp thing going. Piercing, sound. Like she had when somebody screams, it was piercing. Jo kanon mein chub gayi. So something chubna hi has the basic, when you poke something. Okay. So from the passage, which of the following statement best reflects this attitude of the author? Okay, very good. I can see few hands raised. I was expecting the more. Okay. Brahmgupta,
second bench, yellow t-shirt, middle row, Aja. What does the author try to tell you from this? So what is the author's attitude? See, you have to tell me the whole sentence. Yes. Yes. The author who will read the sentence, third sentence? She gave the right answer. She said it's the third answer. Okay, Archimedes, middle row, second bench, Aja, read the sentence. बेटा पूरा आपने read क्यों नहीं किया? Why didn't you read, बच्चे? Okay. The author, yes. Yes. The author supports the idea of blood donation in small quantities. Okay. So nobody will pull out more blood from your body because they know how much is going to not affect you. Okay. So, and this can be like, it takes 2 months to wake up the blood. Okay. To generate all the blood which is there. So listen. So now I'm sure you don't know the meaning of skeptical. I told you to underline all the words which you have come across for the first time. Okay, so this is how you will increase your vocabulary. And I don't know when you start, how many of you intend to go for some competitive exams in India as well as abroad? Everywhere you go, language takes the foremost place. And you will come across these kind of words and these kind of questions, like much tougher than them, like at least 100 times tougher than these. Okay, these are like basics. So please start building your vocabulary and your understanding from today. Otherwise, it is going to be tough for you. Okay. According to the passage, the blood donor must be what? Sick, lazy, stupid. Okay. Aryabhatta, nobody wants to answer the question. Okay, I can just see 2 hands raised. Okay, both in the same row, 3 rather. Middle row, last bench. Aja. Aryabhatta. According to the passage, the blood donor must be healthy, must be ready to donate blood free, must have sufficient quantity of blood in his body, should not have donated blood earlier at any time. Option A must be a healthy person. Very good. So first, the foremost thing is that you should be a healthy person. Okay, that's why you will be able to donate blood. You should not have any chronic illness. Chronic का मतलब ये नहीं होता serious. Chronic का मतलब बहुत सालों से चल रही है and you are on medication, so you cannot donate your blood. Okay, the statement the human body is a remarkable machine signifies that the human body, what is it? Yes, it's a remarkable machine. Okay, Brahmagupta on my, sorry, Aryabhatta on my right. Last bench, red t-shirt. Aja. Yes. The statement, the human body is a remarkable machine, signifies that the human body. C option has the capacity to make up for occasional losses. Okay. Is that has the capacity to make up for occasional losses? Okay. Yes. Now that you have answered all the questions, now my hot question comes. Okay. Look at this statement. The human body is a remarkable machine. And comment on it. Comment on it. Comment means now I want you to see if you want to agree on it or not agree. If you are agreeing, give me the reason why you agree. Why you think human body is a remarkable machine. And if you don't agree, give me a reason why you think human body is not a remarkable machine.
I want the answer now. Everyone, start. You have just, I'll just not give you more than 5 minutes. And I don't want an elaborate 100-word answer. I just want you to make me see the reason why you say yes to a thing or why you say no to a thing. Okay? Quick. This is called high order thinking. Okay, there's nothing there, but whatever you read about it, whatever's little, and from your previous knowledge, we know a lot of, already have a lot of knowledge about human body. So we put together and we make this answer. That is called high order thinking. And I'm sure you people can do it. Let's do it. Start. दिमाग ऐसी चीज है जिसको चलाओगे तो चलता रहेगा, नहीं चलाओगे तो जंग लग जाएगा. Okay? So it is something when you keep using it, it becomes, you will enhance its capacity. The more usage, the more capacity, the more cognitive understandings. If you will not use it, it will shut down. So what is happening here? Archimedes, middle row, first bench. Are you in a dream world? Sorry, second bench. Green t-shirt boy. Have you written the answer? Have you written? I'm asking you a question. Did I tell you that you could rest? Did I? None of you are going to sit idle. Start writing. I'm going to call out anyone. Okay, Euler, middle row, second bench. The boy in green t-shirt, come out. Have you written the answer? Why you think human body is a remarkable machine? Yes or no? The answer is yours. Nothing is wrong or right. I want you to give me the reasons and then I will decide if your reasons look good or not. Second option. Huh? Second option. No, have you written the answer for this? Yes. What is the answer? Can be repaired like a machine when it breaks down. I asked you to give me an answer which I said higher order thinking. Why do you think human body is a remarkable machine? Why? Not just copy the statements from here. This is just one. I want in your language, what is your understanding of the human body? Okay, Archimedes, there is a child in yellow t-shirt who wants to answer. Aja, come. Very bad. Euler, I'm not happy. I'm not. Yes. It can be covered too. It can be Covered also. covered, cured. Okay. What things are there in our body which make it remarkable means extraordinary? I'll give you a clue. What are the things in our body which make it extraordinary? Okay. सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में सबसे एक जो चीज है how do they function? Have you ever understood? We can do so many things. Okay. What is it? Okay. Aryabhatta, that child in blue. Give me 1 point, but give me a point. I want it not to be from here, from your understanding. Yes, Aryabhatta, blue t-shirt on my right. Aja. I'm sure you people, like, that 200 children sitting, I'm sure you people can give me at least 10 points, if not more. Why you think human body is remarkable? It's a remarkable machine.
Okay, बच्चा बोलो आंसर बोलो. Okay. Remarkable. आपकी बॉडी में कितने सिस्टम है? You have learned about human body. You have nervous system. It is a network of neurons and nerves. You have muscle, skeletal system. You have your brain. Okay, how information is passed. Everything, it works together like a machine. You look at things, you perceive. It sends message to the brain. Like this is how machines work, don't they? Or machines have a different way of operation? Tell me. Okay, Archimedes, that little boy who was raising his hand, come out, come out. Archimedes, the one in yellow. Yes, come out. It's a little girl. Sorry, I said little boy. Come out. Archimedes on my left, yellow t-shirt, who had raised the hand. It was a little girl. I mistook it for a boy. Sorry. What? Yeah. But see, it is like, it is like how a machine works. It has different parts, and how when you put everything together and orders and everything, like, you switch on the button and how. This is how our body is. So remarkable. Okay, thousands of networks are going inside our body. And how amazing they perform. We can do such amazing things. Okay, so here we are, like, it is an extraordinary thing. It is an extraordinary thing. If you look at your body, you will see everything has a function. Every single thing has function. And how efficiently they work together. अगर एक भी चीज थोड़ी सी खराब हो जाती है, देखो कितनी प्रॉब्लम आती है. Then the most amazing thing is that our body can self-heal itself also. Okay, it is so resilient, very resilient. It can endure different varied temperatures. It can endure injuries. Like, चोटें लगती हैं, बड़ी भी heal कर जाती है. Even though we need doctors and all, but the body can still endure a lot. So you must see all these things as we put together, our body is really healing. And I want each one of you to write this answer in 50 words, not more, and bring it in the next class. And I'm going to listen to your answers. Don't cheat, because I'll come to know. Use your own, you can read and then write, okay? But express in your own manner. This is how we will start working on our writing skills. Please, everyone, this is your work, okay? One small little 50 words answer I want to write. Even if it's 30 or 40 words, it's okay. I don't care. But it should be about 30 to 50 words. So just explain me, why do you think this body is a remarkable machine? Or why you think this body is not a remarkable machine? Reason, proper reason I want. Okay, so now I think so it's time for us to close the class. Next time I'm going to do the words from this sheet. We are going to do that answer, and I'm going to bring more information which will be given to you in that class. Okay, so don't lose this. You have a very small homework with it, which you will do, which you can do right now in the class too. Okay, so I hope you all liked it, and we are going to work on words and understand their meanings and everything. So, okay, enjoy. I did enjoy the class. It was very fruitful, I think so. So thank you very much, everyone, and have a good day. Okay. Bye.